सी वेबसाइट खाली जदि तुम लिखिदब www.google.com क्रोम रे तुम टाइप करूछ ऑटोमेटिकली सेटा कन्वर्ट हे जिवो का देरे ना HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बुझे तो एटा कुआ HTTP कुआ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोली कुआ ओके हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और तब कुआ HTTP जितेबाला आमे क्रोम ओपन करिवा देखो एटी मोटे स्क्रीन शेयर करूची तुम देखो तो तुम देखा जो तमे नॉर्मली देखो तमरा जो फोन रे तमे जता लिखिबो google.com से ऑटोमेटिक आसी जो HTTP चार्जर तो सेटा ऑटोमेटिक को HTTP बोली देखियो बुझि पाछो ना नहीं HTTP काहे की हुए ता थ्रू रे ही आमे हमर वेब सर्वर टाको आमे एक्सेस करियो बुझिला तापर कोन आसीबो जिते तुम कौन सी बैंकिंग साइट बा सिक्योर साइट को एक्सेस करूछ से जगह लिखा हम HTTPS गोटे जगह लिखा हम HTTP आ गोटे जगह लिखा हम HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन सिक्योर वे बुझे हां सिक्योर देखियो एस लिखा है सिक्योर बुझे हां सिक्योर it stands for hypertext transfer protocol तापर the protocol that is used to transfer the web page or HTML page from one computer to the another using internet is called the HTTP. It is an application layer protocol. ना application layer protocol अर्थ होची कोन जहा थ्रू रे हमें गोटे application टाको access करियो. The hypertext transfer protocol is used by the web server to allow the web page to shown in the web browser. माने ये गोटे मीडियम जहा थ्रू रे कि हमर वेब सर्वर रे जहा सब पेजेस सब अछि से हमको एक्सेस करी देखिबो इफ यू लुक अप इनटू द address bar of your web browser it place where you type the address that you want to visit हमें जो जगह को विजिट करिया को चाहूचे बा जो साइट टा को खोलेबा को चाहूचे हमें सेठी कोन लिखुचे www रा फुल फॉर्म होची को वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम से www भितरु आमे गोटे वेबसाइट टा को बाहर करिया को हेले www डॉट डॉट मींस एक्सेस बा कॉल करियो बुझी होची डॉट मींस एक्सेस बा कॉल करिया को डॉट बोली कुआ जीवो It is a protocol used by the web server to allow the web page shown in the web browser. The address bar of the web browser prefixed with the HTTP. Address bar रे जते बा हमें कौन सी जिंस लिखुचे सेटा ऑटोमेटिक प्रीफिक्स हे जीवो HTTP तमे www लिखिबो किछि समय पर से हे जीवो HTTP रे हे जीवो It work on the client server principle. Client माने आमे होछु client बुझी होची एक्सेस करियो कोठी धर हमें फेसबुक को एक्सेस करियो चाहूचे गूगल को एक्सेस करियो चाहूचे ते सर्वर को एक्सेस करियो गूगल सर्वर को एक्सेस करियो फेसबुक सर्वर को एक्सेस करियो बुझिला and web server which store the web document is called as the HTTP server जो सर्वर रे and web server which store all the web document is called as the HTTP server जे सब देखो वेब डॉक्यूमेंट रखे सेटा को जो वेब सर्वर बोली कहै छै HTTP client send the request to the HTTP server for transferring the web page called as the HTTP client request. जे रिक्वेस्ट पठेइबो HTTP आमे HTTP माध्यम रे आमे रिक्वेस्ट पठाउछे आमे होछु कोन क्लाइंट आमे रिक्वेस्ट पठाउछे देन सर्वर टा एक्सेस होछु तो वी आर कॉल्ड एज द क्लाइंट आ जे जोठु एक्सेस करिवा सेटा कहजिबो सर्वर द HTTP सर्वर प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट HTTP सर्वर कोन करिवो क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करिवो एंड देन हमको रेस्पॉन्स आसीबो आमे रिक्वेस्ट पठेइबा से रिक्वेस्ट प्रोसेस है कि हम पाखरे रेस्पॉन्स आसीबो बुझिला एबे लेखा व्हाट इज HTTP it stands for hypertext transfer protocol it stands for hypertext transfer protocol hypertext transfer protocol next point
This protocol is used to transfer the web pages. This protocol is used, next point. This protocol is used to transfer the web pages or HTML pages from one computer to the another computer, from one computer to another computer, from one computer to another computer using internet is called HTTP. It's called HTTP. It is the protocol used by the web server. It is the protocol used by the web server. It is the protocol used by the web server to allow web pages to be shown in a web browser. To be shown in a web browser. The address bar, next point, the address bar of the web browser, the address bar of the web browser has a prefix with HTTP. HTTP has the prefix HTTP colon double slash. Has prefix with HTTP colon double slash in front of the address. In front of the address. Next point. It works on client server principle. 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 Next point. A web server which stores, next point, a web server which stores all the web documents is called HTTP server. HTTP server. HTTP server. Capital is all capital HTTP. HTTP server. Next point. An HTTP capital लिखा हो. An HTTP client sends a request to HTTP server. पूरी capital है. HTTP server for transferring a web pages, for transferring the web pages, for transferring the web pages called a HTTP client request. HTTP client request. HTTP client request. Next point.
The HTTP server, the HTTP server process the client request. ए पॉइंट रे कोन गला हमें जो रिक्वेस्ट पठेबा से देखो प्रोसेस करिवो. The HTTP server process the client request and gives a response to the requested client called as HTTP server response, called as HTTP server response. तापर हमें आसीबा यूजनेट को आसीबा. नेक्स्ट आउची कोन न्यूज और यूजनेट. आको कोन कुआ जीवो ना नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NNTP, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल or NNTP को आजीवो. It is used for serving Usenet post. Usenet is similar to the forum that many websites have. Usenet has the forum that are dedicated to the specific company as well as the forum that have a wide range of topics. Usenet is divided into the several area. Some of the forum that is used like COMP for discussion computer related topics, SCI scientific subject, REC for discussion related object. जेमती आम लिखा हम .edu. ओके तापरे आम लिखा हम कोन जोटा एगुडा होची गोटे फोरम जो फोरम कोन करे ना गोटे स्पेसिफिक टॉपिक ऊपर इंफॉर्मेशन गुडा को सब स्टोर कर रखी. बुझी होची मुदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वेरे स्टोर करिवे .sci. बुझी होची एजुकेशन रिलेटेड हेले .edu. बुझी होची गोटे रिलेटेड टॉपिक ऊपर माने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक जदि मो गोटे जगह रे रखिबा को चाहूची से जगह रे हमको एटे लिखिबा को बुझी होची एटा को आजीवो यूजनेट. से केवल स्पेसिफिक टॉपिक देखे आ कोन से इंफॉर्मेशन नथिबो. माने हमर गोटे धर डॉक्यूमेंट एक्चुअली गोटे पीडीएफ है कि से स्टोर हेतिबो. हमें जदि ताको वेब सर्वर एक्सेस करबा से डॉक्यूमेंट ही मते प्रिंट करबा को बुझिला. तबे हम लिखि परिबा बुझिला यूजनेट टा काम. It is a news protocol. First point lekho, it is a news protocol. It uses NNTP. It uses NNTP. Second point lekho. It uses NNTP bracket bhitar lekho network news transfer protocol. Network news transfer protocol NNTP. It is used for serving Usenet post. It is used for serving Usenet post. It is used for serving Usenet post. Next point. Usenet is similar to the forums. Usenet is similar to the forum that many websites have. That many websites have. Next point. 。
Forum means a place. Forum means a place or meeting where people can exchange and discuss idea. Where people can exchange and discuss idea. Where people can exchange and discuss ideas. Next point. Usenet is divided into several areas. Usenet is divided into several areas. The Usenet is divided into several areas. Next point. Some of the forums that are included Usenets are some of the forums that are included in Usenets are .comp. Some of the forums that are included in Usenets are comp comp for discussion related topic, comma sci dot for discussion of scientific subject, ହେଲା तो एटा थिला हमर कोन न्यूज और यूजनेट तापर हैला गोफर रो काम होची कोन another tool of the internet is Gopher, a menu based program that enable you to browse for information without knowing where the material is located. हमर material टा कोठी अछि हमको जाना नहीं किंतु हमें ब्राउज करके इंफॉर्मेशन नहीं करियो जेमते कि सपोज हमें गोटे मोबाइल फोन विषय जानिबा को चाहूचे हमें मोबाइल मार दबा गूगल से हमको रिलेटेड वेबसाइट गुडा सब देखाई दो हमको जाना नहीं कोठी अछि तो से गुडा सर्च करी हमें पाइबो गोफर होची से बेले गोटे टूल तो ये कोन करबो एटा होची मेनू बेस्ड प्रोग्राम दैट माने तमे जते बेले कोनोसी व्हाट्सएप देखो व्हाट्सएप साइड मेनू अछि चैट करिवा एग्जिट हवा ग्रुप को ये सब रिपोर्ट करिवा ये सब मेनू बेस्ड प्रोग्राम सब रहिते तो a menu based program that enable you to browse for the information without knowing where the material is located. It lets you search the list of resource and then send the material to you. तो लेखा गोफर रा काम it is an application layer protocol. It is an application layer protocol that provides it is an application layer protocol that provides the ability to extract and view the web document stored on remote web server. Next point, it is used as a search tool.
It is used as a search tool. It is used as search tool. It was designed to access the web server. It was designed to access the web server through the internet. Access the web server through the internet. This protocol is used. This protocol is used to search documents. This protocol is used to search documents or information or information or information from different websites. From different websites. Gopher server is used. Next point, Gopher server is used to store all documents in the server which can be served to Gopher client. Next point, it is based on client server principle. It is based on client server principle in which Gopher client will send a request to Gopher server. Then the Gopher server will process. Then the Gopher server will process the request and give response to the. Then the Gopher server will process the request, and give response to the requested Gopher client. Requested Gopher clients. তারপরে আছে আমরা WAIS. It stands for Wide Area Information Server. Wide Area Information Server. WAIS. Wide Area Information Server. आर काम कहूची कौन? It is an internet search tool. एटा होची सर्चिंग इंजिन सब. हला जेमते गूगल गोटे सर्च इंजिन, गोफर गोटे सर्च इंजिन, आ एटा WAIS टा भी गोटे सर्च इंजिन. It is a search tool. कौन कहूछ के? Wide Area Information Server. Wide Area Information Server. टेलनेट छाड़ देली कि
अच्छा मु एटा पढ़ी देती तो टैलेंट है। The database to be searched can be determined by the user. When WAIS complete a search, it actually searching an index of the database. ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର କଣ? ଯେମିତି ତୁମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହଉଛ କାହା ଦ୍ୱାରା? ରୋଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏକ୍ସାମ ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହବ? ତୁମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ତୁମର ରୋଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ତମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହବ। ତ ଏଇ ଦିଟା ନମ୍ବର ଦେଲେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ବୁଝି ହଉଛି? The WAIS database index is created by a person. WAIS retrieve all the item from the chosen database. ସବୁ item database ro ଆମେ retrieve କରିବ that contain number of word in the search phase. Number of words ସେ ମତେ ଦେଖେଇବ provided that the word in the search phase appear in the indexes of the selected database. ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଡାଟା ଦିଅ ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର କରି ରହିଥିବ। ଯୋଉ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ସେଇ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଟପିକ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଇ ଯାଉଛେ ସେଟା 1 ନମ୍ବର ପେଜ ରେ ରହିବ। ଆମେ କୁହାଯାଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରାଯାଏ ୱେବସାଇଟ। ଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏଇ ଲୋକେସନ ଏରିଆରେ ତ ସେଟା ଆମର ହିଁ ସାଇଟ୍ ଟା ଆଗ ଦେଖେଇବ। ବୁଝି ହଉଛି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ। ଏଟା କେମିତି କରାଯାଏ? ଲୋକ କେତେଟା ୱେରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ସପୋଜ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ତ କଣ କଣ କିୱାର୍ଡ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ +2 ସାଇନ୍ସ ଲେଖିବ, +2 ସାଇନ୍ସ କୋଚିଂ, ନହେଲେ ଲେଖିବ +2 ଆର୍ଟ୍ସ କୋଚିଂ, ନହେଲେ କିଏ ଲେଖିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, କିଏ ଲେଖିବ କମ୍ପିଟେଟିଭ, କିଏ କହିବ କୋଚିଂ, କିଏ କହିବ ଲେଖିବ ଏଜୁକେସନ। ସେ କୋଉ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ମାରିଲେ ମୋ ଏରିଆରେ ବା କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ଏରିଆରେ ମୋ ନାଁଟା ଅଧିକ ଆସେ। କେମିତି ଆସିବ ନା ତା ପାଇଁ ମତେ ମୋ ୱେବସାଇଟ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ମୁଁ ସେଠି କଣ ଲେଖିବି ନା କୋଉ କୋଉ କିୱାର୍ଡ ସବୁ ଯୋଉ ଦବାକୁ ହବ ସେଠି ଲେଖାଯିବ। ଆଗକୁ HTML ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଶିଖିବା କୋଉ କୋଉ କିୱାର୍ଡ କେମିତି ଦିଆହବ। ଗୋଟେ ମେଟା ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ସବୁ ୱେବ ପେଜ ରେ ଗୋଟେ ମେଟା ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜ କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କିୱାର୍ଡ ଲେଖିବା। ତ ଯୋଉ ଲୋକ ସେଇ କିୱାର୍ଡ ମାରିବ ତ ଆମର ସେଇଟା ଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ସେଇ ଜିନିଷ। ବୁଝିଲା? ଆମ ୱେବସାଇଟ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଭିଜିବୁଲ ହବ। ତ ସେଇଟା କୁହାଯିବ କଣ? ସେଇଟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। ଇଟ କଣ୍ଟେନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍ଡ ଇନ ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ପେଜ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି WAIS ରେ ପ୍ରଥମେ ଟୁଲ୍ସ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍ଡସ ଆମେ ଦବା। A relevancy ranking is assigned to each retrieve item, okay, by a talent. Gopher or WAIS client program and increasingly WAIS index database are accessible through the World Wide Web. Through the World Wide Web, it can be accessed. ଆମେ ଏମିତି କିୱାର୍ଡ ଦବା ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସେସ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ ବନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରୁଛେ। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା ଲେଖ WAIS। The first point ଲେଖି ଦେଇଛ it stands for Wide Area Information Server. It is a protocol used to search document. It is a protocol used to search document on internet from many websites at a time. It makes an index of the search document. It makes an index of the search document. It makes an index of the search document. जो जो डॉक्यूमेंट का हमें सर्च करेगा तब इंडेक्स करेगा। सर्च डॉक्यूमेंट of the database. A WAIS database index created by a person. A WAIS database index created by a person.
created by a person. Next point. It provides or assigns. It provides or assigns ranking to each information. Ranking to each information accessed by the user that helps the user to choose the most popular item, to choose the most popular items. Popular items. Next point. A WAIS client program. A WAIS client program is used. A WAIS client program is used to access information from WAIS database WAIS database through www dot. Next point. It can work with other protocol. It can work with other protocol like Gopher, Telnet, etc. अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି କଣ ଟେଲନେଟ ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଟେଲନେଟ ଟା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପଢିବା କଥା ଟେଲନେଟ ଟା ହଉଛି it let you log into the remote computer just as you would if you are there. So many command that would be able to run from the remote computer if you are sitting in front of it, you would able to run from your computer or you log in from it. अच्छा ମୁଁ ଏଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ରେ ବୁଝଉଛି ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାକୁ ମତେ ସପୋର୍ଟ ଦବାର ଅଛି ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି ମୋର ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବା ସେଠି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମତେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାର ଅଛି ତ ଟେଲନେଟ ଥ୍ରୁରେ କଣ ହବ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ଲ୍ୟାପଟପ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବା ସିଷ୍ଟମ ଅଣ୍ଡରରେ କରିପାରିବି by sitting over here in Odisha I can access the computer that is present in the Mumbai केमती ना ए टेलनेट थ्रू तार यूजर आईडी पासवर्ड देकी रिमोट माध्यम रे हम नहीं पाइ गोटे सिस्टम को हम रिमोटली केमती नबा गोटे होचे टीम व्यूअर तुम देखिबो टीम व्यूअर जे तुम इंस्टॉल करूछ तुम कोन करिवो अलगा सिस्टम को टीम व्यूअर जदी नबो तुमे ता सिस्टम रे जहां भी मॉडिफिकेशन करिवार अछि तुम करि करि आमी एडमिन आउट होचे आमी एडमिन एनी डेस्क बुझी होची ए सब डिफरेंट टाइप रो सब सॉफ्टवेयर अछि इंटरनेट रे जोटा कि फ्रीली अवेलेबल अछि जोटा कि हमें अलगा सिस्टम जोटा कि डिफरेंट लोकेशन अछि ताको हमें एक्सेस करि परिबे बुझी होची आ सेठी किछि मॉडिफिकेशन करि परिबे से लोकर जदी कोन से सॉफ्टवेयर किछि अपडेशन करिवार अछि मेजर हार्डवेयर चेंजेस करिवार नै मते खाली कॉन्फ़िगरेशन करिवार अछि तले बाय सिटिंग हियर आई कैन डू ऑल द थिंग्स ओवर देयर बुझिला एटा को आजियो कोन ना टेलनेट बोली को आजियो तो लेखो टेलनेट it stands for telecommunication network next point it is used sorry it is a protocol used for
remote login to distance computer. Remote login to distance computer. Next point. By using telnet, the user can access remote information. The user can access remote information stored in a remote computer. Stored in a remote computer. For that there is a need of special program called as telnet client program. Telnet client program. Using telnet client program, a client login into a remote server, through a user ID, and password. Example लिखो. Team viewer जेंदे मुझे लिखी team viewer VIEWER team viewer VIEWER team viewer application, comma AnyDex application, AnyDex team viewer or AnyDex. अच्छा एबे सबटा इंपोर्टेंट पार्ट हमें डिस्कस करबा गोटे होची नेटवर्क आइडेंटिफायर और आईपी एड्रेस. अच्छा आईपी एड्रेस और नेटवर्क आइडेंटिफायर एटा केमती सब हमें डिफाइन करबा. आईपी एड्रेस को जिबा को पूर्वरु देखो प्रथम हमें गोटे कांसेप्ट पढ़िबा दैट once a network has been set up the node can communicate among themselves but for proper communication the nodes should be uniquely identified. नोड माने कोन कुआ जाय कंप्यूट माने गोटे नेटवर्क रे जेतरा सिस्टम कनेक्टेड रहिबे ताको कुआ जीवो कोन हमें नोड बोली कहियो. कंप्यूटर रे जेतरा सिस्टम रहिबे ताको कुआ जीवो नोड. बुझी होची नोड रो काम कोन. नोड रो एक्चुअली नोड होची हमर नॉर्मल कंप्यूटर को हमें नोड बोली कहिबा. जेते बेले नेटवर्क रे कोनोसी कंप्यूटर रहिबो नोड कोन करिवो ना सेमानक भितरे गोटे नोड आ गोटे नोड सहित कम्युनिकेशन करी. तो कम्युनिकेशन जेते करिवे डाटा ट्रांसफर हबो तो डाटा जेते ट्रांसफर हबो तार एड्रेस दरकार.
ଯେମିତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚେଇବା ବା ଆମେ ଅନଲାଇନ ରେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ମଗଉଛେ ତ ଆମେ ସେଠି କଣ ଦଉଛେ ଆଡ୍ରେସ ଦଉଛେ ଆଡ୍ରେସ ନଥିଲେ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ ତ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ ଟା ୟୁନିକଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ରହୁଛି ତ ସେ ଲୋକଟା ଆସିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ ରେ ଆଇଟମ ଡେଲିଭର କରିକି ଯାଉଛି ତ ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟା ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ରେ ରହିବ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ନା ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କଣଟା IP address हमें यूज करियो बुझे होची but if a node A send some information node B तर दीटा लोक रहिले गोटे ला node A आ गोटे रहिला तमे धर node B तर मु किछि इंफॉर्मेशन तम पाखु ट्रांसफर करिवि then it is mandatory that node A and B are uniquely identifiable on the network हमें uniquely हमें identify हबा दरकार केमती ना रोल नंबर माध्यम रे धर एई जगह रे मु किछि इंफॉर्मेशन पास कर प्रेजेंट पके धर क्लास रे दीटा पिलांग ना सेम थिबो ताले मु धर देवदत्त राखी ता दियो देवदत्त आसे के मु जदि रोल नंबर पकेबी तारे पर्टिकुलर सेही पिलाटा एस आर चंद बुझिला तो इट इज मैंडेटरी that node A and B are uniquely identifiable on the network it is achieved in the following manner each NIC network interface card has unique address assigned it by the manufacturer जेतेबेले आमे कोनोसी मोबाइल किनुचे किंबा लैपटॉप किनुचे सेठी गोटे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहिबो से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द्वारा आमे इंटरनेट एक्सेस करि पारुचे मोबाइल नेटवर्क टाको भी एक्सेस करि पारुचे ताको कोआ जीवो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कोआ जीवो द एड्रेस द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोन करिवो गोटे यूनिक नंबर देथिवो से जो यूनिक नंबर टाको कोआ जीवो मैक एड्रेस जो यूनिक नंबर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रे दिया जाइथिवो किए देथिवो ना मैन्युफैक्चरर देथिवो तो सेटा को कोआ जीवो कोन मैक this address is known as MAC address of the card. It means that machine with NIC can be identified uniquely through the NIC or MAC address. बुझी होची तो प्रथमे कंप्यूटर टा MAC address थ्रू रे uniquely identify हबो MAC address of the NIC is permanent and never changes तो IP address change हेजिवो मुझे जियो यूज करूची मोर आईपी एड्रेस गोटे रही एयरटेल यूज करी तार आईपी एड्रेस अलग रही किंतु मैक एड्रेस केबे चेंज हो मैक एड्रेस ता सब बळे फिक्स रहिबो जदि मोर नेटवर्क कार्ड टा को चेंज कर देबी तारे मोर मैक एड्रेस ता चेंज it means that the machine with the NIC can be identified uniquely through the NIC or MAC address MAC address of NIC is permanent and never changes. This address is a 12-digit hexadecimal number. 12-digit hexadecimal number. 12 टिकिया नंबर रहियो. By convention, MAC address कोन करिवो ना एटा चारटा वे रे डिफाइन करा जाइतिवो. देखो प्रथम एटा दीटा ग्रुप अछि गोटे रहला MM कोलन MM कोलन MM कोलन MM तापर आसीबो कोन SS colon SS colon SS colon SS चारटा MMM चारटा SSS the first MMM of a MAC address contain a ID number of the adapter or manufacturer এই जो चारटा ग्रुप रहिछि এই चारटा ग्रुप किए दिए मैन्युफैक्चरर दबो तो प्रथम चारटा नंबर मैन्युफैक्चरर दबो the second half of the MAC address represent the serial number एटा सबले चेंज हो सॉरी तीनटा मैं चारटा कर दी हैला तो एटा देखो एटा जो फास्ट तीनटा जो रहिला फास्ट तीनटा कोन करिवो ना मैन्युफैक्चरर को एड्रेस दो माने मैन्युफैक्चर कंपनी जदा HP रहिथिबो किमा लेनेवो रहिथिबो जो कंपनी रहिथिबो सी तार नाटा एठी दो आ एटा तार सीरियल नंबर रहिबो जेमते कि सपोज ये गोटे देछि एग्जांपल 00A0 colon C9 गोटे देला तापर एटा देला ता सीरियल नंबर
14 colon C8 colon 35. The prefix 00 A0 C9 indicate the manufacturer Intel Corporation. এটা হচ্ছে Intel Corporation ର ID. ବୁଝି ହଉଛି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢୁଛ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? IS ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଲେ IA ଡବଲ ଟୁ। এটা ହେଲା ମସିହା, এটা ହେଲା IA। Intermediate arts, intermediate science, ISC intermediate, year then serial number ଦଉଛି। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ସେମିତି Intel ର ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଏଇଟା ହଉଛି Intel ର ଗ୍ରୁପ ଟା। Intel ଆଉ ତାର ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ଲେଖ MAC address, it stands for media access control. It stands for media access control. It stands for media access control. Each NIC has a unique address. Next point. Each NIC has a unique address assigned by the manufacturer. Assigned by the manufacturer. Assigned by its manufacturer. This address is known as MAC address of the card. Address is known as MAC address of the card. MAC, MAC, capital लिखियो वाला MAC address of the card. It is used to uniquely identify. It is used to uniquely identify an NIC by its MAC address. An NIC by its MAC address. MAC address. Next point. MAC address of NIC is permanent. MAC address of NIC is permanent. And never changes. Next point. This address is a 12-digit hexadecimal. This address is a 12-digit hexadecimal or 48 bits number or 48 bits number. MAC address are usually written as MAC address is usually written as তিনটা M colon তিনটা S.
रश्मि सिमरन करथिले सिमरन पटेल लिखिला और एल्स और तळगु लिखिबो mm-mm-mm-ss कॉलन जगह एसएस ता तळगु लिख और देखि ता तळगु लिखिबो तापर तापर कोन लिख द फर्स्ट हाफ the first half of MAC, the first half of MAC, the first half of a MAC contain first half bracket ভিতরে কল লিখিব bracket ভিতরে দেই দিও MM colon MM colon MM তিনটা MM কেমনে লিখিবে জানি পাইলা the first half আগে the first half bracket ভিতরে MM colon MM colon MM of a MAC address contains manufacturer ID contains manufacturer ID number and second half of MAC address and second half of a MAC address represents the serial number represents the serial number assigned to second half लिखिलो ब्रैकेट भीतर SSS बुझो assigned to NIC by its manufacturer example लिखो 00 colon 0A 00 colon 0A colon C9 00 colon 0A colon C9 colon 14 colon C8 colon 35 where where 00 colon 0A 00 colon 0A colon C9 is the manufacturer ID and 14 colon C8 colon 35 is the serial number तो एटा थिला हमर कोन ना MAC address ठीक है तो नेक्स्ट क्लास रे हमें आईपी एड्रेस पढ़ियो आपको पढ़ी के आसीओ नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन है देखा नेबे नेक्स्ट क्लास आ भीतर मु देबी नोटिफिकेशन देबी ता भीतर आसी रखियो